Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 1 of class 3. The chapter name is numbers. Dear student, we already completed our 9 parts in various previous classes. Today we will start our next part, that is our part number 10. Dear students, as you remind, in previous part we will start our Devanagari script. जहाँ पर हमने जो नंबर सिस्टम है उसको देखा था, कौन से वाले फॉर्म में देखा था हमने, देवनागरी फॉर्म में. इट मीन्स हमने अलग ही तरह से जो हमारा देवनागरी स्क्रिप्ट है उसमें नंबर्स को देखा, उन्हें आइडेंटिफाई किया, उनके एडिशन किए, प्रीवियस नंबर, नेक्स्ट नंबर वाली सब एक्टिविटीज़ की थी. आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे सम ऑफ क्वेश्चंस को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. सो यू कैन सी हियर our exercise and here is our question number 1 and the question says read the given number aloud and write in expand form. and I hope आपको अच्छे से रिमाइंड है हमारी एक्सपेंड फॉर्म, क्योंकि हमने इतने अच्छे से समझा इसे जब चैप्टर में हमने इसको रीड आउट किया था. तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं. यू कैन सी हेयर नंबर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट नंबर इज 1 10 100. हाउ मैनी 100 देयर आर? We can see there is 1 as 100, so we can say there is 100. How many tens are there? We can check on the tens places. We can see 1, so we can easily say we have 1 10. It means we have the value of 10 is as 10. So what is the single unit here? We can check. Here is single unit or ones places पर हम check कर पा रहे हैं 5 को, so we can easily say we have 5 value as single unit. So the finally number is 100, 10 and 5. It means 115. चलिए अब इसका expand form करते हैं. तो देखिए 100 places पे कितना है? 1. It means we have 100. In short we can say we have one bundle. Okay, and on the tens places we can check there is one value, so we can easily say we have 10 only. Okay, and at last we can check the single unit or ones places where we see as 5, so value is as 5. clear? expand form clear कर दी. एक्सपेंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंड फॉर्म? एक्सपेंड फॉर्म में हम ये करते हैं जो नंबर होता है उसे एक्सपेंड करते हैं अकॉर्डिंग द प्लेस वैल्यू सिस्टम. इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. तो चलिए नेक्स्ट नंबर को चेकआउट करते हैं. और ये कौन सी फॉर्म में राइट किया गया है? ये है हमारा देवनागरी. ओके, चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं. 1 10 100 3 डिजिट नंबर है. सो हाउ मैनी 100 आर देयर? वी कैन चेक 2 इज 100, सो वी इजीली राइट 200. ओके, एंड टेंस की वैल्यू चेक कीजिए, दैट आर आल्सो 2, सो वी कैन से 2 tens मीन्स 20. एंड एट लास्ट वी चेक ऑन वंस प्लेसेस एज 0. 0 मीन्स नथिंग, सो वी राइट एज ones places 0. clear? okay, what is the 0? 0 have या 0 meaning होता है nothing. if we have nothing then we say we have 0 units, 0 things, 0 etc. okay, clear? चलिए next की बात करते हैं. what is the number? 1 10 100. how many 100 there are? there are 800. and how many tens are there? there are 9 tens. it means 90. and we can check the single unit is as 9, so easily we can say the number is 899. क्लियर? चलिए एक्सपेंड फॉर्म क्रिएट करते हैं. 800. ओके, हाउ मेनी टेंस? 9 टेंस. इट मीन्स 90. 9 single units, so we write as single unit place or ones place as 9. At last we can check another number. It is also write in Devanagari script, so we easily find the number because we learn Devanagari digits also. So चलिए स्टार्ट करते हैं. So how many 100 there are? What is the symbol? The symbol shows as 4, so we can easily say we have 400. okay, and how many tens are there? on the tens places we can check 1, so we can easily say we have 10. 1 tens means 10 होता है value. and at last single unit on the places of ones places we can check 8, so we can easily see we have नंबर इज एज 8. सो फाइनली हमने एक्सपेंड फॉर्म क्रिएट कर दी. चलिए मूव करते हैं. अब यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द गिवन नंबर्स and write the numbers which come immediately before the given number and after the given number. in short हमें यहाँ 2 एक्टिविटीज़ का कंबाइंड दिया गया है. हमें जो मिडल नंबर हमारे इंफॉर्मेशन में रहेगा हमें उसके जस्ट बिफोर नंबर को भी बताना है एंड आफ्टर नंबर को भी राइट डाउन करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यू कैन चेक हेयर मिडिल नंबर्स. ओके, लाइक 1 नंबर यहाँ पे देख रहे हैं हम 1 10 100. हाउ मेनी 100 देयर आर?
we can check 1 is as 100, so easily we can say it is 100. Okay, 8 is as tens places, so we can easily say is 80. And at last on single unit we can check 7, so we can easily say we have the value of 7 in single unit or ones places as 7. So finally the number is 187. So what is the before number of 187 and how we can find the before number or the after number? So dear student, we know कि if we want the next number, yeah, we can say the after number, then we add 1 in the given number. Okay, and if we want the previous number or the before number, then we subtract 1 in the given number. So जब हमें प्रीवियस नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे गिवन नंबर में से, और अगर हमें आफ्टर या नेक्स्ट नंबर चाहिए तो हम 1 ऐड कर देंगे. सो इजीली वी कैन से कि 187 में अगर हम 1 को लेस कर रहे हैं देन वी गेट द प्रीवियस नंबर इज एज 186, और अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं देन वी फाइंड द नेक्स्ट नंबर दैट विल बी 188. ओके, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट. चलिए नेक्स्ट की ओर चेकआउट करते हैं. सो यू कैन चेक द अनदर नंबर. What is the number? Find कीजिए ones places, tens and 100 places. Here we can check on the 100 places 7, so we can easily say the number is beginning from 700. Clear? चलिए, what is the tens place value? The tens place value we can check, there is 9 and 9 tens means 90, and at last on the single unit or ones places we can check as number 9. So single unit or ones places has the same value, मतलब जितना सिंगल प्लेस या सिंगल वैल्यू पर जितना नंबर हमें दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही होती है. सो यहाँ पर इजीली हम कह सकते हैं हमारा नंबर है 799, एंड व्हाट इज द प्रीवियस नंबर एंड व्हाट इज विल बी द नेक्स्ट नंबर. सो इजीली वी कैन से अगर हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 798 विल बी द प्रीवियस नंबर, एंड अगर हम 1 ऐड कर देते हैं देन 800 our next number or after number. Dear student, how it can be possible? Because यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 7 बंडल, 9 bunches and 9 single unit, and after 1 single unit adding we can say कि हमारे पास में जो सिंगल यूनिट का अमाउंट है वो कितना कन्वर्ट हो गया है, वो हो गया है 10. तो जब हमारे पास कोई थिंग 10 ग्रुप्स में हो जाती है, 10 थिंग्स एक ग्रुप में आ जाती है, देन वी इजीली क्रिएट द बंडल एंड वी हैव 9 बंडल आल्सो, सॉरी 9 bunches also, and 1 bunches we will create by the single unit. At last we can say we have 10 bunches, and in short we can say if we have 10 bunches it means we have 100 units. We already have 700 units and 100 units more, then how many total amount? The total amount goes as 800 units. So next number will be 800. Clear? चलिए next की ओर मूव करते हैं. You can check here also देवनागरी script and we can check the number ones, tens, 100. How many 100 there are? We can check the 3 is 100, so we can easily say there are 300. 1 tens, it means 10, and 0 single unit, so number is 310. Before number will be 309. Okay, and the after number will be 311. Clear? चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. यू कैन चेक, दिस इज सो इजी बिकॉज वी हैव ओनली बंडल्स. इट मीन्स वी हैव ओनली 100 प्लेस वैल्यू, वी हैव नथिंग ऑन द प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड टेंस प्लेसेस एंड सिंगल यूनिट आल्सो, बिकॉज इन दोनों प्लेसेस पे वी कैन सी एज 0 एंड 0 मीनिंग nothing. So easily we can say we have 400. So number is 400. Before number will be 399. Clear? चलिए, and what will be the after number? That will be 401. How it comes? It comes after adding 1 in the given number. The given number is 400. When we add the 1 in given number, so we get the next number as 401. So clear? चलिए next की ओर move करते हैं. You can check here our next question, the question number 3, and the question says identify the pattern and write the next number of the given series. Here you can check the series. Okay, यहाँ पे हमें क्या करना है, सीरीज को कंप्लीट करना है. जैसा फॉर्मेट हमें दिया गया उसे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे पैटर्न का यूज कैसे किया गया. एंड आई होप यू नो लर्न अबाउट पैटर्न बिकॉज वी लर्न अबाउट द पैटर्न इन आवर प्रीवियस क्लास 2. ओके, पैटर्न होता क्या है? पैटर्न इज ए वे थ्रू विच वी कैन अरेंज द नंबर्स, डेटास, थिंग्स
in a proper way and every data have a similar relationship, that is our pattern. It means pattern वो तरीका है जिसमें हम things को, हमारे datas को, हमारे numbers को arrange करते हैं और उन सभी में कोई ना कोई relation होता है. So check the relationship here, then we can identify the pattern and we can fill up the blanks. So चलिए start करते हैं. Number is 1 times 100, how many 100? 209. So number is 209, then 211, then 213. What is missing? We can check here. We have 209, but missing is 210. Okay, then we have 211, but missing is 212. Then we have 213. So easily we can say कि हमारे पास में जो पैटर्न है नंबर्स का वो कुछ ऐसा क्रिएट किया गया है, इसमें 1 नंबर को हमने लेफ्ट किया है. ओके चलिए देखते हैं. 209, 210 हमने नहीं लिया. देन नेक्स्ट नंबर हमने लिया 211, देन हमने 12 नहीं लिया. देन वी कैन टेक 213. तो हम कौन सा नंबर नहीं ले सकते? 214. एंड देन वी हैव 215. अब हम 16 को नहीं लेंगे. देन 217. अब हम 18 को नहीं लेंगे. देन नेक्स्ट विल बी 219 एंड आवर सीरीज हैज कंप्लीट. ओके, सो पैटर्न इज, क्या है पैटर्न? यहाँ पे 1 नंबर का एडिंग किया गया है. इट मीन्स हमने जो 209 है 1, उसका अगला जो नेक्स्ट नंबर है उसे नहीं लिया है, उसके बाद वाला नंबर हमने यहाँ पे पुट अप किया इन दिस पैटर्न. सो इजीली हमने पैटर्न को फाइंड किया एंड सीरीज को कंप्लीट कर दिया. तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं. You can check 1 times 100. How many 100 there are? We can check. There are, the value of 100 is as 3, so number is 300. How many tens are there? Nothing, because we can see there 0, and at last we can check the value of the single unit or ones places, that is shown as 5. So easily we can say the value of the single unit is as 5. So finally the number is 305. Where is the tens? Because tens place value की जो सिस्टम में हमने यहाँ देखा नंबर में जो tens की प्लेस वैल्यू है वो हमें शो हो रही है 0. So we can't say कि हमारे पास कोई टेंस भी है. इट मीन्स वी हैव नो टेंस. सो इजीली द नंबर इज 305. एंड आफ्टर नंबर देखिए 310. सो हाउ मेनी डिफरेंस? इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड कीजिए. 305 से 306 नहीं है, 307, 8, 9 एंड 10. इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर हम 305 में ऐड 5 कर रहे हैं देन हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है. तो अब पैटर्न को आगे और देखते हैं, चेक करें. 310 में हमने फिर से 5 ऐड किया तो हमारा नेक्स्ट नंबर आया 315. सो इजीली वी कैन से द पैटर्न इज ऑन डिपेंड by adding 5 in the given number. So हमारा जो given number है उसमें हम 5 ऐड कर रहे हैं, देन हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड हो रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 305, 310, 315, 320. ओके, देन 5 फिर से ऐड कर दीजिए 325, देन 5 फिर से ऐड कर दीजिए, देन 330 इज आवर लास्ट नंबर ऑफ द सीरीज. सो फाइनली हमने इस सीरीज को भी कंप्लीट कर दिया. लेट्स मूव टू नेक्स्ट सीरीज. यू कैन चेक हेयर मोर सीरीज. इज इन दिस सीरीज वी कैन सी देवनागरी numbers and in this also numerical numbers. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नंबर फाइंड करते हैं. 1 times 100. How many 100 there are? We can check. 1 as 100, so easily we can say they are 100. Okay, how many tens are there? We can check. On tens places is 1, so we can easily say we have 10. Okay, and at last on ones places we have 0, so we have nothing on ones places. So finally the number is 110. Okay, अब नेक्स्ट नंबर को चेक कीजिए. 120. इट मीन्स 120. सो रिलेशनशिप क्या है? इन दोनों में जब ऐड बाई 10 कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है. देखिए 110 में हमने 10 को ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 120. चलिए इसमें फिर से हमने 10 ऐड कर दिया, ऐड बाई 10. सो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 130. चेक कीजिए क्या ये 130 है? यस. सो वी लर्न, या हमने ये अंडरस्टैंडिंग कर लिया कि इस पैटर्न में यूज किया गया है ऐड बाई 10 इन द गिवन नंबर टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर. ओके, सो चलिए अब हमारा गिवन नंबर हो गया 130. इसमें हमने 10 ऐड किया, नेक्स्ट नंबर विल बी 140. and after adding 10, 150, then next will be 160. क्लियर? फाइनली हमने सीरीज को कंप्लीट कर लिया. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. वंस, टेंस, 100. हाउ मेनी 100 देयर आर? चेक कीजिए. 7. सो इजीली वी कैन से वी हैव 700. On the tens places we can check as 8, so we can easily say we have 80. And on the ones places we have 0, so we can easily say we have nothing on the ones places. So finally हमारा नंबर है 780. And next number is
On the ones places we can check 8, tens places we can check 7, so we can say we have 70. On 100 places we have 7, so we can easily say we have 700. So finally the number is 778. और डियर स्टूडेंट्स वी कैन चेक एंड वी कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहे हैं, इट मीन वी गोइंग एज बैकवर्ड और प्रीवियस नंबर, हम प्रीवियस नंबर की ओर मूव कर रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट, जहाँ हमने प्रीवियस एक्टिविटी में क्या किया था, ऐड बाई नंबर किया था, यहाँ हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा. सो देखिए डिफरेंस चेकआउट कीजिए. 80 से 78 पे हम जा रहे हैं, इट मीन्स हम 2 स्टेप्स बैक जा रहे हैं यानी -2. ओके, अब 78 से हम फिर से -2 किया हमने, तो 776 पे मूव कर गए. अब हम हैं 776 पे, यहाँ से हमें 2 स्टेप पीछे की ओर चलना है, बैक चलना है. तो नेक्स्ट नंबर विल बी 774, अनदर विल बी 772, देन 2 less 770 इज द आवर फाइनल नंबर ऑफ द सीरीज. सो कंप्लीटली हमने सीरीज को फिलअप कर दिया. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. हियर यू कैन चेक आवर लास्ट सीरीज ऑफ द क्वेश्चन. यू कैन चेक इट इज आल्सो यूजिंग बाय देवनागरी स्क्रिप्ट. ओके, सो फाइनली नंबर को फाइंड कीजिए. वंस, tens, 100. How many 100 there are? The value of 100 is shown as 3, so we can easily say we have 300. On the tens places we can check as 2, so we can easily say we have 20. And on the ones places we have nothing, so we can see there 0. So finally our number is 320. Next number is 523, it means 325. so easily we can say इनका जो रिलेशन है वो ऐड बाई 5 है, बिकॉज 320 में हमने 5 स्टेप्स मोर किए. देन वी फाइंड द नेक्स्ट नंबर एज 325 एंड आफ्टर एडिंग बाई द 5, so the final number is 330. you can check here. अब हम इसमें फिर से 5 ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 335. ओके, चलिए इसमें फिर से हमने 5 ऐड किया, देन नेक्स्ट विल बी 340 एंड आफ्टर एडिंग 5 द फाइनल नंबर इज 345. सो आवर सीरीज हैज़ बीन कंप्लीटेड. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आज का जो हमारा एक्सरसाइज थे उनमें क्या क्या लर्न आउट किया, एक बार रिवाइज करते हैं. हमने नंबर्स का जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर नंबर फाइंड किया. हाउ वी कैन मैक द नंबर्स पैटर्न, हमने नंबर का पैटर्न बनाना सीखा है. और साथ ही साथ हमने इतनी सारी एक्टिविटीज़ करके जो हमारा प्रीवियस नॉलेज था, चाहे वो देवनागरी स्क्रिप्ट का हो, चाहे एडिशन का हो, चाहे फिर हमारा सब्ट्रैक्शन नॉलेज हो, उसका यूज़ किया है एंड हमारी काउंटिंग का जो बेस है उसे स्ट्रॉन्ग किया है. तो आई होप आप अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.